डिवीजन मैट्रिक्स जो है, हाँ इस क्लास में हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं. You don't have gone from my earlier classes, you can go through, you can find a link there. तो confusion matrix की बात करते हैं. Confusion matrix in imbalance data. Confusion matrix क्या है? This is a table used to evaluate the performance of a classification model. It shows how many predictions are correct and how many of them are incorrect. It is especially important in classification problem. However, in imbalanced data set, it can give misleading results. Now, confusion matrix का structure है predicted positive, predicted negative, actual positive is true, and actual negative, right? तो ट्रू पॉजिटिव फॉल्स एक्चुअल पॉजिटिव में क्या होगा? ट्रू पॉजिटिव फॉल्स नेगेटिव, एक्चुअल नेगेटिव में फॉल्स पॉजिटिव ट्रू नेगेटिव. फॉर्मूला है एक्यूरेसी इज इक्वल टू टीपी प्लस टीएन डिवाइड बाय टीपी प्लस टीएन प्लस एलपी प्लस एलआई. ट्रू पॉजिटिव प्लस ट्रू नेगेटिव, एक्यूरेसी इज इक्वल टू ट्रू पॉजिटिव प्लस ट्रू नेगेटिव डिवाइडेड बाय ट्रू पॉजिटिव प्लस ट्रू नेगेटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव. सब आ जाता है ना. बट प्रिसिजन में हमने देखा only positive, that is true positive divided by true positive plus false positive also. Doesn't matter. False positive मतलब negative है, हम जानते हैं, right? But फिर भी true positive divided by true positive plus false positive in case of precision. But in case of recall, it is important. In case of recall, actual positive, true positive divided by true positive plus false negative. False negative का मतलब होता है आपका positive, right? Precision is equal to TP, true positive divided by true positive plus false positive, while recall is equal to positive divided by true positive plus false negative. But accuracy में true positive plus true negative divided by true positive plus true negative plus false positive plus false negative. Imbalance data set का मतलब होता है one class has far more sample than others, right? Like 990 normal cases, 10 registrations. In imbalanced data sets, confusion metric can show very high accuracy even when the model is poor. Why high accuracy is misleading? If a model always predicts the majority class, then it predicts no disease for all patients, right? 990 correct predictions, that is correct, true negative. ठीक है, इसमें नहीं है तो true negative. But 10 wrong prediction, that is false negative. बल्कि उनका 10 positive था, right? Accuracy यहाँ पे हमें 99% मिला, but model detects 0 disease cases. This is the useless model in real life. हमें तो एक भी डिजीज वाला इंसान होगा तो उसको डिटेक्ट करना होता है, राइट? तो इसीलिए इम्बैलेंस डेटा सेट के लिए हम इसको इम्पोर्टेंट नहीं मानते हैं, ठीक है? दिस इज यूजलेस मॉडल. Simple explanation में accuracy depends heavily on true negatives. In imbalance data, true negative is very large, so accuracy becomes misleadingly high. ठीक है, ये देख लिया आप लोगों ने, 99% accuracy मिल रहा है. Accuracy alone is not enough for evaluation, so we have to go for others. Like you have recall, precision तो है ही, recall ज़्यादा important है. हाँ, recall में पूरा actual को देखते हैं, recall. Okay. Now, what is the base metrics for imbalance data? Instead of accuracy, we use precision, correctness of positive prediction, and recall, ability to find actual positive, and F1 score. That is balance between precision and recall. ठीक है. Now, visual intuition, we text both classes properly. That model in imbalance data includes minority class. Okay, so ये आपको इतना याद रखने से सही है. F1 स्कोर भी आप यूज कर सकते हो क्योंकि ये प्रिसिशन और रिकॉल को बैलेंस करते हैं, मतलब बैलेंस बिटवीन प्रिसिशन एंड रिकॉल. आपको दिखा देता हूँ F1 स्कोर का फॉर्मूला. ठीक है, जस्ट अ मिनट. This is the formula. F1 is equal to 2 into precision into recall divided by precision parts.
रिकॉल, ये तो हार्मोनिक मीन है, राइट। तो ये बैलेंस, प्रिसिजन रिकॉल का बैलेंस वैल्यू लिया जाता है, तो इसलिए F1 स्कोर इज गुड, 2 into precision to recall divided by precision plus recall. Ranging from 0 to 1, war 0 matlab wars, 1 matlab perfect. It is very highly effective for evaluating data set with imbalance classes. Right? समझ में आ गया ना? टू प्री इंटू प्रिसिजन इंटू रिकॉल डिवाइडेड बाय प्रिसिजन प्लस रिकॉल, ये इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट को याद रखना। अब आते हैं हम रैंडम फॉरेस्ट वर्सेस बूस्टिंग में। हम कॉन्टिन्यूसली, आपको पता होगा कि बाकी कुछ लास्ट क्लास में से डिस्कस करके आ रहे हैं। आई एम ट्राइंग टू कवर एज मेनी एज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पॉसिबल। तो ensemble learning methods improve machine learning performance by combining multiple models. Two important ensemble techniques are random forest bagging method and boosting method में आधा bush gradient boosting. Random forest क्या होता है? Is an ensemble technique where multiple decisions are built independently and each tree is trained on a random subset of the data. फाइनल आउटपुट हम कैसे लेते हैं? मेजॉरिटी वोटिंग क्लासिफिकेशन के लिए और रिग्रेशन के लिए एवरेज, राइट। नाउ ये मैनी इंडिपेंडेंट ट्री लेने का मतलब ये है, हम इसको कंबाइन करके वेरिएंस को रिड्यूस कर सकते हैं। फाइनल प्रेडिक्शन मेजॉरिटी वोट इन परपोज रिड्यूस वेरिएंस, वेरिएंस को let me show you the formula of variance also. Instead of variance क्या है? Statistical measurement of two dispersion of the dispersion of data points around their mean. ठीक है, low variance indicates data points are close to the mean, while high variance means they are widely spaced. Let me show you the formula. Okay. देखो, xi minus x bar होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n, ये xi जो कोई पॉइंट्स है हमारा, और ये है मीन। क्योंकि वेरिएंस हमें ये बताते हैं, अगर वेरिएंस कम हुआ तो ये क्या होगा? मीन्स के आसपास रहेगा, राइट। मीन के पास रहेगा। ज्यादा हुआ तो मीन से बहुत दूर में रहेगा। ये होता है आपका फॉर्मूला, xi माइनस एक्स एस डिवाइडेड बाय होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। इसका सामने निकाला हमने, ये हो गया वेरिएंस। ठीक है, आप ये फॉर्मूला भी याद रख लो। लेकिन वेरिएंस तो समझ में आ गया, और स्टैंडर्ड डेविएशन अगर आप इसका स्क्वायर रूट ले लिया तो दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन। सो वेरिएंस इज इक्वल टू I goes from 1 to n xi minus mu divided by square divided mu, मतलब ये मीन की बात कर रहे हैं, divided by n xi minus mu square divided by n, that is variance, and if we take the square root that becomes standard deviation. क्लियर? और नॉर्मल अगर आप देखोगे तो ये है, ये इसका वेरिएंस, यहाँ से अगर वैल्यू मतलब कितने वेरिएंस ज्यादा मिल रहा है तो कितना मीन से वो ज्यादा दूर में। ठीक है, गुड। बूस्टिंग, बेगिंग तो समझ में आ गया। बेगिंग एक एंसेंबल टेक्निक है, और रैंडम फॉरेस्ट एक सस टाइप ऑफ बेगिंग टेक्निक। boosting is an ensemble technique. Models are trained but here sequentially. ठीक है, यही डिफरेंस है। यहाँ पे मॉडल को हम सिक्वेंशियली ट्रेन करते हैं। इस न्यू मॉडल करेक्ट्स एरर्स ऑफ द प्रीवियस वन। ये भी बहुत सिक्वेंशियली हम इसलिए करते हैं, जो लास्ट मॉडल था उसका जो आपका एरर था उसको करेक्ट करते हैं। Key idea: weak learners are combined step by step to form a strong learner. Main purpose: to reduce the bias, improving learning accuracy. Random forest parallel learning होता है, but boosting sequential learning होता है। ठीक है, मेकिंग माने पैरेलल, boosting मतलब sequential. Independent is in case of random forest, but यहाँ पे dependent. Main goal: reduce variance, but यहाँ reduce bias. Average results, but focuses on mistake. Overfitting less likely, but can overfit if not controlled, because sequentially हो रहा है, बहुत ज़्यादा एक के ऊपर एक डिपेंड होके बहुत ज़्यादा ठीक तो ग्रो कर रहा सकते हैं। स्पीड आपका पुश रैंडम फॉरेस्ट फास्टर होगा, बट ये आपका बूस्टिंग क्या होगा? स्लोअर होगा। ठीक है,
तो रैंडम फॉरेस्ट समझ में आ गया। देन बूस्टिंग में we will trees that one after another. History learns from the previous mistakes. Previous mistake improves with performance and step by step improving accuracy and reducing bias. ठीक है। Example is the 100 decision trees are trained. Is give a vote yes or no. Final decision majority vote. But boosting में first model makes mistake, second model focus on wrong prediction, third model improves again, final model becomes very strong. ठीक है। आप विजुअली देखो, ये है आपका रैंडम फॉरेस्ट, सबको पैरेलली करा रहा है, मतलब रिपोर्ट करके फाइनल आउटपुट। ठीक है। वाइल बूस्टिंग में क्या कर रहा है, सीक्वेंशियली कर रहा है। बूस्टिंग में सीक्वेंशियली कर रहा है, मॉडल 1 एरर्स, मॉडल 2 एरर्स, मॉडल 3 फाइनल सॉल्व। तो रैंडम फॉरेस्ट reduces variance by averaging the multiple trees, and this thing reduces bias by learning all these things. I hope it is clear. रैंडम फॉरेस्ट में एवरेज ये है, एडवांटेज ये है कि ये ओवरफिटिंग कम होता है, वर्क्स लार्ज डाटा सेट, इजी टू पैरालाइज, boosting high accuracy for full predictive performance, works well on complex pattern. ठीक है। So random forest and boosting both are powerful and several techniques, but different approach. A random forest uses bagging to reduce variance by training multiple independent trees in parallel, while boosting builds models sequentially to reduce bias by correcting previous errors together, and they form the foundation of the modern and central learning. ठीक है, इतने जानना आपके लिए सफिशिएंट है इस क्लास में। थैंक यू।